Now, see, in the last session of the introduction to the abdomen, you watch here, we have removed, in fact, everything here. If you look at this diagram in the transverse section, we have removed here anteriorly all the 9 layers of your anterior abdominal wall, removed. The posterior abdominal cavity, viscera has been removed also. And so much so that the posterior abdominal wall, same 9 structures from inside the parietal peritoneum has been removed. This is ninth layer. And you have entered into the eighth layer, that is called the extraperitoneal fat. We call them retroperitoneal. All the viscera in the retroperitoneum, whether primary or the secondary, as secondary retroperitoneal or primary retroperitoneal organs. Primary means the kidneys, suprarenal gland, and great vessels. And secondary means the GIT organs, including pancreas. All these organs you have removed here, and you are removed the extraperitoneal fat, and you have removed even your I say from inside seventh layer, there is the fascia transversalis, which in fact behind will be called as the psoas fascia, or downward it will be called as the fascia iliaca. You have removed that as well. And now you are looking at the 3 layers of the muscles, in fact. 3 layers of the muscles. And after that, the 3 layers of the skin and fascia. But you will see that 3 layers of the muscles in such a way that if you look at this here, this is called here the psoas major muscle. So you see first here, the psoas major. And if the spinal cord is present here in your lumbar vertebrae, for example, and in your thoracic also, because spinal cord stops at the lower border of the L1. And from here, when the spinal nerves comes, the interior rami of the spinal nerves, they enter into the psoas major muscle. And within the psoas major muscle substance, they will form here a plexus that is called the lumbar plexus. And from lumbar plexus will emerge now the branches here from its lateral border, from the lateral border of psoas major. From lateral border of psoas major, I'm sorry, not here, this is green color, but it's in red color muscle. And many nerves will emerge from the psoas major, from lateral border especially. 1, 2, 3, 4, and one through the substance and one from the medial side. 6 muscles will emerge, just like you see sprout from the psoas major muscle. Because within the substance of psoas major muscle, the interior rami of your spinal nerves, the lumbar spinal nerves, they are embedded, they are in fact taking shelter here, but they will mix up together to form the plexus. We call them lumbar plexus. And if this is here, so here in the posterior abdominal wall, you are watching. On the lateral side, you see this muscle that is called the quadratus lumborum. This is the second layer. And in the third layer means from inside, if you are going here, the layer number, it will be 6, psoas major. Layer number 5, you are going outside here, is a quadratus lumborum, just superficial to that. And most superficial being here, which you can feel at the latissimus dorsi. This is what we call here the muscle. So you see here 3 muscles now. You are removing here, I say, psoas major, removing quadratus lumborum, removing your latissimus dorsi. And then you will come to the fascia and the skin. And in these areas, you are actually watching here the psoas major. And see, the psoas major is present above, but when you are actually reaching here into the lower side, abdomen doesn't have bone, but you see you are going down here, iliac fossa, this is actually the part of abdomen. So here in the abdomen, you will see here the muscle. Psoas major continues, here another muscle is added, that is called the iliacus muscle. This is called the iliacus muscle. Iliacus muscle, and then above, this is called the quadratus lumborum. And they will be most superficially supported here by your processes, called the latissimus dorsi muscle, partly by the trapezius also. If this is will be actually, yeah, like your muscles are there here, this is your posterior abdominal wall, and in between you have got a vertebra, so one vertebra you have to discuss. Means in the posterior abdominal wall, and so much so that on the 2 sides of vertebral column we have here sympathetic chain. So in the posterior abdominal wall, when you're looking at the muscles, for example, wall only, then you have to discuss lumbar vertebra, at least one lumbar vertebra. Then the muscles, 3 muscles. Then lumbar plexus. And then will be the sympathetic chain. So we have these 4 structures to develop here in your posterior abdominal wall. So this was in steps, in stepwise, not just these structures you will see in the anterior abdominal wall, very important structures. Yeah, then you enter into your abdominal cavity where you see the viscera, their blood supply, etc., all the anatomy and their clinical correlates.
and then you will go to the posterior abdominal wall, where you will see the structures are the viscera of the posterior abdominal wall, and then the posterior abdominal wall itself. And all these structures you will actually see, not only the structures anatomy, but their clinical facts also, the clinical correlates also. And then if you discuss these and their basic you have got in your grip, you see that clinical scenario will be very, very easy to understand here in any type of exam here. This was introduction to the abdomen. तो अभी आपने यहाँ पे देखा ना, मैंने आपको बताया कि एब्डोमेन को जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया, तो एब्डोमेन को आप तकरीबन यूँ समझ लो कि आप 4 स्टेप्स में पढ़ें, 3 स्टेप्स में चलें या 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रक्चर, इसी डायरेक्शन में आप जाएं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जब, तो आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को देखेंगे कि ये कैसे पेरिनियम के साथ कंटिन्यूस है, स्क्रोटम उसमें देखना होगा, स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। और उसके बाद जाहिर है मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन देखेंगे तो कुछ रेमिफिकेशंस, उसकी कुछ मॉडिफिकेशन समझ में आएंगी। फिर उस मसल्स के बीच में होगा इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल है अगर तो फिर इंग्वाइनल हर्निया के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इस बीच में आप देखेंगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल, तो वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल रेक्टस शीथ में एनक्लोज्ड है, और रेक्टस शीथ को देखना होगा। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर उसकी वॉल के न्यूरोवास्कुलर बंडल्स वगैरह, फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सी इंसिशंस हम मूवमेंट देते हैं और उनके साथ क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। फिर आप इनको लेयर्स को काटें और देखें, और पता होना चाहिए आपको कि सीक्वेंस में ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आपसे अगर पूछेंगे कि क्या सीक्वेंस है, आप एक नीडल पास करते हो, आप पैरासेंटेसिस करते हो और पहुंचाते हो अपनी नीडल के टिप को इन द पेरिटोनियल कैविटी, तो पेरिटोनियल कैविटी वो 10वीं स्टेप्स पे आती है। तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया, ये किस तरीके से सीक्वेंस में लेयर्स हैं, और इस रास्ते से जब आप लेटरली या मिडिल में आप कोई चीज पास करते हो तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको कम क्रॉस करेंगे, क्या क्या डैमेज हो सकता है, ये क्लिनिकल कोरिलेशन। और उसके साथ जब आपका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कंप्लीट हो जाए तो आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को खोलें और पेरिटोनियल कैविटी में या एब्डोमिनल कैविटी में अंदर आए, और वहां पर फिर आपको पेरिटोनियम को बताना होगा कि पेरिटोनियम क्या है, क्या रिफ्लेक्शंस हैं उसकी, क्या लिगामेंट्स हैं, और इस साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को और उसके सारे ऑर्गन्स उनकी एनाटॉमी करनी है, और इसके साथ साथ जो ग्लैंड्स हैं, बिलियरी ट्रैक्ट वगैरह, और साथ में लिवर, पैंक्रियाज एंड स्प्लीन। ये करने के बाद फिर उनके न्यूरोवास्कुलर बंडल्स एक साथ, हर ऑर्गन का अलग अलग नहीं, एक साथ उनके न्यूरोवास्कुलर बंडल्स, एक दफा एओर्टा उठाया और उसके ब्रांचेस को फैला दिया, और उसके साथ साथ फिर रिटर्न में वेंस लेके आए और साथ में पोर्टल सिस्टम वगैरह। ये आपका एब्डोमेन और उसके विसरा होंगे, और उसके बाद जैसे एब्डोमिनल विसरा को रिमूव कर दिया आपने, तो आप पीछे पहुंच जाएंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर, और यही 9 लेयर्स जो फर्स्ट से लेके 9th तक गए थे, तो वहां से फिर 9th से लेके फर्स्ट तक जाएंगे। तो पेरिटोनियम को जैसे हटाओगे, तो जैसे यहाँ था एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, तो उधर भी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, लेकिन क्योंकि बिहाइंड है इसलिए इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल फैट, और उधर ही होती है आपकी किडनी, सुप्रारेंडियल ग्लैंड, ग्रेट वेसल्स वगैरह। लेकिन वहां पर जाके पता चला कि कुछ पेरिटोनियल या जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स थे वो रेट्रोपेरिटोनियल हो गए हैं वहां पर। तो कुछ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स जीआईटी की शक्ल में आपको मिलेंगे, जैसे ड्यूडिनम, जैसे असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, इवन पैंक्रियाज पूरा ऑलमोस्ट सारा टेल के, वो सारी चीजें वहां पर आपको रेट्रोपेरिटोनियल मिलेंगी। तो वो विसरा आपको वहां पर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में करने पड़ेंगे, और जब उन विसरा को हटाओगे तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल खुद नजर आएगा, और फिर उनको देखना होगा। वो भी इसे 3 लेयर्स में, जैसे सॉस मेजर, क्वाड्रस लंबरम, प्लेट्स मेटार्सी, और यही स्ट्रक्चर्स। और फिर पीछे आप जाकर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में देखोगे कि उन्हीं से मसल से ओरिजिन ले रहा होगा, कुछ उनके फेशियाओं वगैरह, फेशिया से आपका डायफ्राम भी। तो डायफ्राम भी पोस्टीरियर बॉडी वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी चीजें आपको एब्डोमेन में मिलेंगी। तो एब्डोमेन इन्हीं के साथ एक एक स्ट्रक्चर करके लेके आगे चलेंगे, और अगले फ्यू वीक्स के अंदर हम एब्डोमेन को इन तरीके से हम खत्म करेंगे। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, और उसके बाद इनके कोरिलेशंस साथ साथ करते जाएंगे। कोशिश करेंगे साथ साथ करने की, अगर फिजिबल है तो, नहीं है तो फिर एक साथ ही कर देंगे। और फिर ये जब आपको आ जाएगा, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक अगर आपको नहीं आया तो क्लिनिकल कोरिलेशन किसी काम की नहीं, क्योंकि जब आपको बेसिक नहीं आएगा, बेसिक आएगा अच्छे तरीके से, तो फिर क्लिनिकल नॉर्मल आएगा तो एबनॉर्मल समझ में आएगा, और जब नॉर्मल एबनॉर्मल को दोनों को मिलाओगे और समझ में आपको आ गया, तो फिर कोई सिनेरियो आपको बताएगा तो आपका ब्रेन, आपका जो माइंड है वहां नेविगेट करेगा, आपको पता चल जाएगा क्या बोल रहा है, क्या होगा, यहाँ कौन सी रिलेशन है। ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर टेल की बात हो रही है ऑफ पेंक्रियाज की, तो टेल ऑफ पेंक्रियाज किसके साथ है, स्प्लीन के साथ रिलेटेड है, तो स्प्लीन के साथ उसका क्या रिलेशन हो सकता है। ये जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, तो आपके लिए काफी चीजें ये आसान हो जाएंगी आगे। तो हम इसी तरीके से चलेंगे, फिर आपके लिए किसी भी टाइप का एग्जाम कोई माने नहीं रखता, बड़ा आराम से आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको एक सीक्वेंस के साथ जाना, पहले बेसिक, फिर उसके क्लिनिकल कोरिलेट्स, फिर उसके क्लिनिकल केसेस फॉर होमवर्क पर्पस, वो आपको दिया जाएंगे, आप जाके घर करें, और फिर आखिर में सिनेरियो कैसे आते हैं और किस तरीके से, वो फिर एक जो हम मॉक टेस्ट वगैरह लेंगे, या उस दौरान आपको टेस्ट मैं भेज दूंगा,
वो आप करके मुझे आप बताएंगे, और जहाँ जहाँ जो डिफिकल्टी है वो आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक दफ़ा आप अगर ये सारे रीजन, जैसे एब्डोमेन है, थोरेक्स भी ऐसे ही करना था, क्या होगा आपने, जैसे एब्डोमेन है, जैसे पेल्विस है, आगे चल के जैसे हेड एंड नेक है, और उसके बाद जैसे ब्रेन है या न्यूरोनाटमी है, इसको अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और 4 स्टेप्स में इस तरीके से हम करेंगे, यानी पहले बेसिक्स और उसके बाद, और फिर बेसिक में हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अभी हमने आपको बताया एब्डोमेन को 4 बेसिक्स के, एब्डोमेन बेसिक को हमने 4 इसमें तकसीम किया है, जैसे एब्डोमेन, एंटी एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल कैविटी, पोस्ट एब्डोमिनल वॉल, चलो 3 हिस्सों में। देखो पोस्ट एब्डोमिनल वॉल में उसके विसरा बिन वॉल, एंटी एब्डोमिनल वॉल सेपरेटली, फिर उसके अंदर कैविटी, और कैविटी के विसरा हमने की। तो 3 हिस्सों में किया, और हर एक के बेसिक, क्लिनिकल केसेस एंड देन सिनेरियो, हर एक जगह पर इसी तरीके से यहाँ पर 4 हिस्सों में, यहाँ पर तो पूरे रीजन को सब रीजन में डिवाइड किया, और हर एक सब रीजन में चार दफा उसको 4 स्टेप्स में किया हमने, बेसिक, क्लिनिकल कोरिलेट्स, केसेस एंड देन द क्लिनिकल सिनेरियो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी एब्डोमेन में आपने बताया कि 30-40 टॉपिक्स इस तरीके से होंगे, हम डेली 2-3 टॉपिक करें तो 20 क्लासेस के अंदर ये खत्म हो सकता है। कोशिश करेंगे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे आपका रिस्पांस क्या है, और इसी तरीके से यहाँ पर। तो दिस वाज योर क्लास।